1 bitter, adjective. कड़वा, तल्ख. Having a sharp, pungent taste or smell, not sweet. Synonyms: sharp, acid, acidic, pungent, acrid, tart, sour, biting, harsh, unsweetened, vinegary. 2 confrontation, noun. झगड़ा, मुकाबला करना. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. Synonyms: conflict, clash, brush, fight, battle, contest, encounter, head-to-head, face-off. 3 hiatus, noun. खलल, नक्स. A pause or break in continuity in a sequence or activity. Synonyms: pause, break, interval, interruption, suspension, intermission, interlude, gap, lacuna. 4 revive, verb. बेहोशी से होश में आना, आहा, जान डालना. Restore to life or consciousness. Synonyms: resuscitate, bring round, bring to life, bring back to consciousness. 5 thaw, verb. सुन होना, पिघलना, गलना. Of ice, snow, or another frozen substance, such as food, become liquid or soft as a result of warming up. Synonyms: melt, unfreeze, soften, liquefy, dissolve, unthaw. 6 apave, verb. फर्श बंदी करना. Cover a piece of ground with flat stones or bricks, lay paving over. Synonyms: cover, surface, floor, top, finish, concrete, over, asphalt, flag, tile, tar. 7 apprehensive, adjective. खौफज़दा, फिक्रमंदी. Anxious or fearful that something bad or unpleasant will happen. Synonyms: anxious, alarmed, worried, uneasy, nervous, concerned, agitated, restless, edgy. 8 strained, adjective. सूजन, बनावटी. Showing signs of nervous tension or tiredness. Synonyms: drawn, careworn, worn, pinched, tired, exhausted, weary, fatigued. 9 ally, noun. इत्तेहादी, ताल्लुक बनाना, दोस्त. Combine or unite a resource or commodity with another for mutual benefit. Synonyms: combine, marry, couple, merge, amalgamate, join, pool, fuse, weld, knit. 10 ambitious, adjective. बुलंद हौसला, हौसलामंद, ख्वाहिशमंद, मुश्ताक. Having or showing a strong desire and determination to succeed. Synonyms: aspiring, determined, forceful, pushy, enterprising, pioneering, progressive, eager. 11 escalation, noun. बढ़ावा, तेजी, शिद्दत बढ़ाना. A rapid increase, a rise. Synonyms: rapid increase, rise, hike, advance, growth, leap, upsurge, upturn, upswing. 12 rapprochement, noun. मुफाहमत, मुसालहत. Especially in international affairs, an establishment or resumption of harmonious relations. Synonyms: reconciliation, increased understanding, détente, restoration of harmony, agreement, cooperation. 13 reconciliation, noun. मुसालहत, सुलह, मुतनासिब ताल्लुकात. The restoration of friendly relations. Synonyms: reuniting, reunion, conciliation, reconcilement, pacification, appeasement, placating. The Middle East security landscape could be transformed by an unanticipated development that took place earlier this month. Long-standing regional rivals Saudi Arabia and Iran agreed to restore bilateral relations after 7 years of bitter confrontation and a diplomatic hiatus. The deal was signed in Beijing, which mediated the agreement. In the joint trilateral statement, the two countries pledged to respect the sovereignty of states and non-interference in the internal affairs of states. They agreed to revive their 2001 Security Cooperation Pact and renew their General Cooperation Agreement of 1998, which ranges over trade, economy, and investment. The breakthrough followed several days of talks in China, which were preceded by 2 key high-level visits
by Iranian President Ebrahim Raisi to Beijing in February 2023 and Chinese President Xi Jinping's trip to Saudi Arabia in December 2022. These summit-level meetings and Saudi-Iranian exchanges in the region laid the necessary groundwork for the March 10 agreement. The thaw in Saudi-Iran relations is a potential game-changer for the region, provided it gathers steam and lasts. It has far-reaching implications for the Middle East and beyond, which could pave the way for a more stable and peaceful region. Both countries had strong motivations to seek détente. Iran's interest was to break out of the diplomatic isolation imposed on it by the US-led West. It was also deeply apprehensive about the likelihood of Saudi-Israeli diplomatic relations being established at Washington's prodding and behest. That would have deepened Tehran's isolation and gravely aggravated its security challenges. The Saudi motive emanated from its security anxieties over escalation in tensions with Iran. In recent years, Saudi Arabia has faced several attacks, including on its oil facilities and infrastructure. Over half of the kingdom's oil production was affected by a missile and drone attack on its oil processing installations in 2019, for which Riyadh blamed Tehran. For Riyadh, reduced tensions with Iran aims to address these security threats. Other factors have also been at work. America's diminished diplomatic and military footprint in the Middle East as it switched focus to its strategic priority of countering China, as well as strained relations between the Biden administration and the Saudi leadership, seemed to convince Riyadh that Washington was no longer a reliable or consistent ally, much less a guarantor of its security. The agreement is a tentative first step towards détente, but it can pave the way for a more stable region. Domestic considerations also figured prominently for the Saudi government, which is pursuing an ambitious Vision 2030 plan that envisages diversifying the economy and enhanced spending on infrastructure and social sectors to make the country a global investment hub. Its domestic reform agenda urges lowering of regional tensions and a stable and predictable environment. Under Crown Prince Mohammed bin Salman, Saudi Arabia has not only seen significant reforms in the country, but also initiatives abroad that have set a new direction for its foreign policy. It has moved to mend ties with Qatar and Turkey. And it has shown it can distance itself from Washington, which has prompted many experts to note that MBS is pursuing a foreign policy increasingly independent of the West. The rapprochement has raised the question of how this will affect conflicts, proxy wars and issues in the region on which the two countries have been at loggerheads, especially Yemen but also Syria, Lebanon, and Iraq. Will de-escalation follow on these regional fronts? If the two countries are able to implement their new understandings, it is likely that the sources of regional instability are reduced. Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud cast the agreement as indication of his country's emphasis on political solutions and dialogue. Progress in talks on Yemen could be the first test of whether a peace dividend can result from the rapprochement. Of course, this is only a tentative, opening act of a challenging process. Détente, after all, is a process, not an event. There are many questions about the follow-up and scope of the reconciliation. Is it tactical? Will it endure? Can decades of mistrust be overcome? Will they be able to address each other's security concerns? Will the West try to undermine the deal? Can the two countries deal with underlying issues and transcend the Shia-Sunni schism that has historically been a driver of their enmity? Comments in the Saudi media have focused on whether Iranian behavior would change to make détente meaningful. China's role is seen as critical. According to Faisal Abbas, editor-in-chief of Arab News, China as guarantor of the agreement has a high stake in ensuring that the détente makes headway. In fact, China has scored a major diplomatic victory by its mediation. It has demonstrated its growing global influence and established itself as a major player in the Middle East. China is the biggest trading partner of both countries and, unlike the US, has good relations with both to play peacemaker. The region accounts for 40% of China's oil imports, which underlines its stakes in the region. On the other hand, the U.S. has been diplomatically marginalized by the development, for now.
Its effort to isolate Iran has suffered a major setback at a time of rising tensions between Washington and Tehran over Iran's nuclear program. The U.S. plan to normalize Saudi-Israel relations has also been scuttled for the immediate future. Israel faces a major reversal in seeking to build a regional coalition against Iran. Israel's former Prime Minister Naftali Bennett called the agreement a serious and dangerous development and a fatal blow to the effort to create a regional alliance against Iran. Washington's muted response indicates its unease and concern over the rapprochement. Many Western commentators, however, saw the thaw for what it is. Peter Baker wrote in the New York Times that the Chinese-brokered deal had upended U.S. diplomacy in the Middle East. Jeffrey Feltman, a well-respected former senior UN and U.S. official, was quoted in news reports as saying the agreement will be interpreted, probably accurately, as a slap at the Biden administration and as evidence that China is the rising power. Many tests lie ahead for the rapprochement to gather momentum, but for now it holds the hope of regional powers seeking regional solutions to their disputes. The writer is a former ambassador to the US, UK and UN. Published in Dawn, March 20, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. मशरिक़ वस्ता का सिक्योरिटी मंजरनामा इस्मा के अवाइल में होने वाली गैर मुतवक्के पेशरफ्त से तब्दील हो सकता है। देरीना इलाकाई हरीफ सऊदी अरब और ईरान ने 7 साल के तल्ख तसादुम और सिफारती तातुल के बाद दोतरफा ताल्लुकात की बहाली पर इत्तफाक किया है। इस मुआहदे पर बीजिंग में दस्तखत किए गए थे, जिसने मुआहदे में सालसी की थी। मुश्तरका से फरीकी बयान में दोनों ममालिक ने रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम करने और रियासतों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का अहद किया। उन्होंने 2001 के सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे को बहाल करने और 1998 के अपने अमूमी ताउन के मुआहदे की तजदीद करने पर इत्तफाक किया, जो तिजारत, मईशत और सरमायाकारी से मुताल्लिक है। ये पेशरफ्त चीन में कई दिनों तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद सामने आई, जिससे कबल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने फरवरी 2023 में बीजिंग का दौरा किया था और दिसंबर 2022 में चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी अरब का दौरा था। इन सरबराही इजलासों की सतह की मुलाकातों और खित्ते में सऊदी ईरान तबादलों ने 10 मार्च के मुआहदे की ज़रूरी बुनियाद रखी। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में सर्द महरी खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, बशर्ते कि इसमें तेजी आए। मशरिक़ वस्ता और इससे आगे इसके दूर रस असरात मुरतब होंगे, जो ज़्यादा मुस्तहकम और पुरअमन खित्ते की राह हमवार कर सकते हैं। दोनों ममालिक के पास इत्तेहाद की तलाश के मजबूत मुहर्रिकात थे। ईरान का मुफाद अमरीका की ज़ेर क़ियादत मगरिब की तरफ से इस पर मुसल्लत करदा सिफारती तन्हाई से बाहर निकलना था। इससे इस बात का भी शदीद खदशा था कि वाशिंगटन के इशारे पर सऊदी इसराइल सिफारती ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। इससे तेहरान की तन्हाई मजीद गहरी होती और उसके सिक्योरिटी चैलेंजेस में मजीद इजाफा होता। सऊदी अरब का मकसद ईरान के साथ कशीदगी में इजाफे के हवाले से सलामती के खदशात हैं। हालिया बरसों में सऊदी अरब को तेल की तनसीबात और बुनियादी ढांचे समेत मुतअद्दिद हमलों का सामना करना पड़ा है। 2019 में सऊदी अरब की तेल की पैदावार का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा उसकी तेल प्रोसेसिंग तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले से मुतासिर हुआ था, जिसका इल्ज़ाम रियाज ने तेहरान पर आयद किया था। रियाज के लिए ईरान के साथ कशीदगी कम करने का मकसद इन सलामती के खतरात से निमटना है। दीगर अवामिल भी काम कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीका के कम होते हुए सिफारती और फौजी असर और रसूख की वजह से इसने चीन का मुकाबला करने की अपनी तज़वीराती तरजीह के साथ साथ बाइडन इंतज़ामिया और सऊदी क़यादत के दरमियान कशीदा ताल्लुकात ने रियाज को इस बात पर कायल किया कि वाशिंगटन अब काबिल एतमाद मुस्तकिल इत्तेहादी नहीं है और न ही इसकी सलामती का ज़ामिन है। ये मुआहदे की जानिब एक आर्जी पहला कदम है, लेकिन ये ज़्यादा मुस्तहकम खित्ते की राह हमवार कर सकता है। सऊदी हुकूमत के लिए घरेलू मामलात भी नुमायां थे, जो मुल्क को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बनाने के लिए मईशत को मुतनव्वे बनाने और बुनियादी ढांचे और समाजी शुबों पर अखराजात में इजाफा करने का इरादा रखता है।
इसका दाखिली इस्लाहाती एजेंडा इलाकाई तनाव को कम करने और मुस्तहकम और मुतवक्किर माहौल पर जोर देता है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़ियादत में सऊदी अरब ने न सिर्फ मुल्क में अहम इस्लाहात देखी हैं, बल्कि बैरून मुल्क भी इक़दामात किए हैं जिन्होंने इसकी ख़ारजा पॉलिसी के लिए एक नई समत मुतय्यन की है। इसने क़तर और तुर्की के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ पेश कदमी की है, और उसने जाहिर किया है कि वो खुद को वाशिंगटन से दूर कर सकता है, जिसने बहुत से माहिरीन को ये नोट करने पर मजबूर किया है कि MBS तेजी से मगरिब से आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस मुफाहमत ने यह सवाल उठाया है कि इससे खित्ते में तनाज़ात, प्राक्सी जंगों और मसाइल पर क्या असर पड़ेगा, जिस पर दोनों ममालिक खास तौर पर यमन बल्कि शाम, लबनान और इराक भी तनाज़ात का शिकार रहे हैं। क्या इन इलाकाई महाजों पर कशीदगी में कमी आएगी? अगर दोनों ममालिक अपनी नई मुफाहमत पर अमल दरामद करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इम्कान है कि इलाकाई अदम इस्तेहकाम के ज़राए कम हो जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बन फरहान अल सऊद ने इस मुआहदे को इस सियासी हल और बातचीत पर उनके मुल्क के जोर का इशारा करार दिया। यमन पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त इस बात का पहला इम्तिहान हो सकती है कि आया मुफाहमत से अमन का फ़ायदा हासिल हो सकता है या नहीं। यकीनन ये एक चैलेंजिंग अमल का सिर्फ एक आर्जी इफ्तिताही अमल है। आखिरकार ये एक अमल है, कोई वाकया नहीं। मुसालहत की पैरवी और दायराकार के बारे में बहुत से सवालात हैं। क्या ये हिकमत अमली है? क्या ये बर्दाश्त करेगा? क्या दहाइयों से जारी अदम एतमाद पर काबू पाया जा सकता है? क्या वो एक दूसरे की सलामती के खदशात को दूर कर सकेंगे? क्या मगरिब इस मुआहदे को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा? क्या दोनों ममालिक बुनियादी मसाइल से निमट सकते हैं और शिया सुन्नी इख्तिलाफात से बालातर हो सकते हैं, जो तारीखी तौर पर उनकी दुश्मनी का मुहर्रिक रहा है? सऊदी ज़राए इब्लाग में होने वाले तबसरों में इस बात पर तवज्जो मरकूज की गई है कि आया ईरान के रवैये में तब्दीली आएगी या नहीं। चीन के किरदार को अहम समझा जाता है। अरब न्यूज़ के एडिटर उन चीफ फैसल अब्बास के मुताबिक मुआहदे के ज़ामिन की हैसियत से चीन का इस बात को यकीनी बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा है कि मुआहदे को आगे बढ़ाया जाए। दर हकीकत चीन ने अपनी सालसी से एक बड़ी सिफारती फतह हासिल की है। इसने अपने बढ़ते हुए आलमी असर और रसूख का मुजाहिरा किया है और ख़ुद को मशरिक़ वस्ती में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर कायम किया है। चीन दोनों ममालिक का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और अमरीका के बरक्स दोनों ममालिक के साथ अमनसाज का किरदार अदा करने के लिए अच्छे ताल्लुकात रखता है। यह खित्ता चीन की तेल की दरामदात का 40% है, जो खित्ते में उसके मुफादात को जाहिर करता है। दूसरी तरफ अमरीका इस पेशरफ्त से सफारती तौर पर हाशिए पर चला गया है। फ़िलहाल ईरान को अलग थलग करने की इसकी कोशिशों को एक ऐसे वक्त में बड़ा धचका लगा है जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के अमरीकी मंसूबे को भी मुस्तकबिल करीब के लिए रोक दिया गया है। इसराइल को ईरान के खिलाफ एक इलाकाई इत्तेहाद बनाने की कोशिश में एक बड़ी तब्दीली का सामना है। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इस मुआहदे को कि संजीदा और ख़तरनाक पेशरफ्त और ईरान के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद बनाने की कोशिशों के लिए मुहलिक धचका करार दिया है। वाशिंगटन का खामोश रद्द अमल इस मुफाहमत पर उसकी बेचैनी और तशवीश की निशानदेही करता है। ताहम बहुत से मगरबी मुबस्सरीन ने देखा कि ये क्या है। पीटर बीकर ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि चीन की सालसी में होने वाले इस मुआहदे ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सफारतकारी को नुकसान पहुंचाया है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका के साबिक सीनियर ओहदेदार जेफरी फिलेटमैन के हवाले से खबरों में कहा गया है कि इस मुआहदे को बाइडन इंतज़ामिया पर तमांचा और इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा कि चीन उभरती हुई ताकत है। मुफाहमत को रफ्तार हासिल करने के लिए बहुत से इम्तिहानात बाकी हैं, लेकिन फ़िलहाल इससे इलाकाई ताकतों को अपने तनाज़ात का इलाकाई हल तलाश करने की उम्मीद है। मज़मून निगार अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक सफ़ीर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 20 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary
Like, subscribe, share and comments.